Assalamu alaikum and welcome back to Learn with Larib. So today we will be starting respiratory system. So I have noticed that most of the people study from Rafiullah and that is the main resource. As I have explained in my resources videos, I used multiple resources including First Aid and Rafiullah. My videos, however, and an integration of all those resources so that you can perform your best in your exam. So for your ease, what I have done is that I have formed a structure and I'll tell you that which topic corresponds to which specific point in Rafiullah. Because I know following one book is easier for most of the people, and you might miss out on first aid or important concepts. So I'll go through the topic on the pattern, which is international for a specific topic, because that creates better understanding. Rafiullah is a very good book for FCPS. However, it's just an MCQ oriented book, and they're just MCQ points. I believe that you cannot do good in exam only following Rafiullah. You need to have good structure or good concepts behind that. So that is where I am going to help you. Okay, so these are the topics and we will be following them. I have written down which Rafiullah point it corresponds to and how I'll cover the whole chapter. This is chapter 5 and the Rafiullah edition I am referring to is the 14th edition. So we'll start off with surfactant and neonatal respiratory distress syndrome. So basically covering embryology, then anatomy, then physiology, and these videos for now are for physiology. We'll cover on patho and pharmacology later on. So you can pause and take a screenshot of these chapters, and this is the pattern we will be moving forward with. All right, I'm sure you would have taken some screenshots. We'll start with today's topic, and that is a little bit of embryology, including important MCQs. So, starting with surfactant, it refers to Rafiullah point 122 and 123. I will not be discussing ARDS right away because you will have a better understanding once we have done the whole chapter. So, I'll skip specifically that part from Rafiullah. From these 2 points, and then we'll do it towards the end of this chapter, and then I'll refer back to those MCQs. So, lung development starts in the 4th week of gestation from the respiratory or the lung bud. So for the stages of lung development, मैंने initially इसको इतनी importance नहीं थी, but later on I saw some MCQs. Just do it with a mnemonic that is every pulmonologist can see alveoli. Embryonic stage is from week 4, that's where the development starts, to week 7. Pseudoglandular is from 5 to 17 weeks. This is where terminal bronchioles develop and the capillary network also develops. Canalicular is from week 16 to week 25. Now there are respiratory bronchioles as well, and a prominent capillary network is there. Secular phase is from week 24 till the birth. So when a baby is born, the lung development is in secular stage. Alveolar stage starts from week 36 to 8 years. All right. Now we'll talk about surfactant specifically, or surfactant develop कैसे होता है. उससे पहले alveolar cells कौन से होते हैं? So we have 3 types of cells. Type 1 pneumocytes, ठीक है? We have type 2 pneumocytes and alveolar macrophages. Type 1 cells, or as you can see in this picture over here, alveolar type 1 cells, these are like this. So ये हैं squamous cells, 57% ये होते हैं, और these are for gas, and these are for gas exchange. Now this is what we need to study. Type 2 alveolar cells, they're also known as type 2 lamellar body pneumocytes, type 2 alveolar cells, type 2 pneumocytes, whatever you want to call them. They are cuboidal and clustered kinds of cells. As you can see in the diagram over here, these are responsible for secreting surfactant from their lamellar body. So this is the lamellar body, and in the alveolar type 2 cells, and it secretes the surfactant. So the lamellar bodies, they secrete surfactant. They also serve as stem cells for 1 and 2 pneumocytes. जब lung damage होगा, these will proliferate. Alveolar macrophages, as you know by the name macrophages, they are for phagocytosis. So alveolar macrophages are the macrophages present in alveoli, and they are present there to phagocytose foreign material. इसकी significance क्या है? Hemosiderin laden macrophages will be found in heart failure. ठीक है? They can be found in heart failure if there is pulmonary edema or alveolar hemorrhage due to heart failure. Then the alveolar macrophages will be hemosiderin laden in the lung. ये इसकी significance है, clinical significance है, we need to know. अच्छा. Now coming to surfactant.
We know that it is produced by tender bodies of type 2 pneumocytes. Now, what is the composition of the surfactant? It consists of dipalmitoyl phosphatidylcholine. ठीक है, आई नो ये इतना बड़ा याद नहीं रहेगा, जस्ट रिमेंबर DPPC. इसको एक दो दफा just write it and then you'll not forget it. You will be able to recognize it in the MCQs. इसकी आगे से कॉम्पोजिशन क्या होती है? लेसिथिन रेशियो स्फिंगोमाइलिन. ठीक है, 2:1 में आता है. दिस इज नॉट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज आर एन MCQ. ये भी MCQ है, ये भी MCQ है, ये भी MCQ है, ये भी MCQ है. The green stars, all of these are MCQs. Increases lung compliance. ये देखो, in this picture, this is the surfactant layer. This will decrease the tension of the alveoli and it will increase the compliance of the lung. So if alveolar surface tension is being decreased, that means that it prevents it from collapse. Surface tension होगी तो alveoli collapse होने के chances ज़्यादा होंगे. Surface tension decrease होगी, alveolar collapse के chances कम होंगे, lung recoil कम होगा, वापस उसके बंद होने की. अगर फॉर एग्जांपल आप देखो कि आप एक रोल्ड चीज लेते हो, ठीक है, जो काफी देर से, अगर एक पेपर को भी रोल कर दो ना, वो काफी देर से एक रोल्ड उसमें पड़ा रहेगा. अब उसके ऊपर एक आप उसको सीधा हाथ से, अच्छा, अब आप उसको हाथ से सीधा करोगे वो वापस रोल हो जाएगा, फिर करोगे वो वापस रोल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो जैसे आपने वो रोल किया होता है ना, उन सरफेसेस की आपस में सरफेस टेंशन की वजह से अट्रैक्शन होती है. ठीक है, आप जैसे ही उसके ऊपर एक लेयर अप्लाई कर दोगे, किसी जेल की अप्लाई कर दोगे, तो सरफेस टेंशन, वो बॉन्ड जो है उनका आपस में नहीं बन सकेगा, क्योंकि बीच में तो एक चीज आ गई ना, एक लेयर आ गई. उसकी वजह से वो वापस उस तरह से रोल नहीं होगा जिस तरह वो पहले होता है. एंड देन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट टू द लंग. एल्विलाई में उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी क्योंकि एक लेयर आ गई, उसकी वजह से कोलैप्स प्रिवेंट होगा, वो वापस जुड़ नहीं सकेगा. लंग रिकॉइल कम हो जाएगा, ऑब्वियसली वो जुड़ेगा तो सही बट उतना नहीं. लंग रिकॉइल कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? इन रिटर्न लंग कंप्लायंस इंक्रीज हो जाएगी. अब कंप्लायंस क्या है? कंप्लायंस इज द मेजर ऑफ लंग्स एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड एक्सपैंड. कोलैप्स का ऑपोजिट क्या है? स्ट्रेच एंड एक्सपैंड. ऑब्वियसली कोलैप्स होना बंद होगा, इसका मतलब है वो स्ट्रेच एंड एक्सपैंड, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, वी लर्न अबाउट लंग कोलैप्स मोर इन द लेटर वीडियोस. ये मेन फंक्शन है सर्फेक्टेंट का. इसको मैंने इतनी डीपली इसलिए एक्सप्लेन किया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी में क्या होगा. और मैंने ये डीपली इसलिए भी एक्सप्लेन किया कि ये आपको याद रह जाए एग्जैक्टली, क्योंकि ये आपके MCQ में आता है एज इट इज. अब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, लंग कंप्लायंस विल डिक्रीज. ये भी एज इट इज उसमें आता है, MCQ में आता है. MCQ पढ़ते हुए याद रखना है कि वो पूछ रहे हैं सर्फेक्टेंट कॉजेज और सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी कॉजेज. एक वर्ड से, डेफिशिएंसी वर्ड से सारी चीजें ऑपोजिट हो जाती हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू कि सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी होगी, सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी, मतलब जो वॉल्स है वो आपस में जुड़ने को करेंगी. सो दैट विल कॉज एल्वियोलर कोलैप्स. यहाँ पे prevent हो रहा था due to deficiency, obviously there will be an alveolar collapse. Now this alveolar collapse is shown as ground glass appearance on chest X-ray. ये chest X-ray देखो, this is a chest X-ray of a neonate and this is the ground glass appearance due to atelectasis. क्या होता है? Surfactant deficiency की वजह से alveolar collapse होता है and patchy atelectasis होता है. ठीक है, this is an MCQ. And इसको थोड़ा सा indirect कर दो, there's another MCQ that surfactant activity in the lung is most directly related to prevention of what? Alveolar collapse or atelectasis. Prevention of atelectasis. ठीक है, जहां भी compliance की, lung compliance की, alveolar collapse की बात हो या surface tension की बात हो, according to its function, its surfactant is related to it. अब आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, किसी भी तरह से घुमा फिरा के MCQ दें, you should be able to solve it. अच्छा, now coming to neonatal respiratory distress syndrome. The cause is due to deficiency of surfactant. And pathophysiology क्या होगी? This will be the pathophysiology of neonatal respiratory distress syndrome. Risk factors क्या होते हैं? किन बच्चों में ये हो सकता है? Premature. Because last stages में surfactant develop हो रहा होता है. If a premature baby is born, that means कि उसके अंदर इतना surfactant produce नहीं हुआ. Gestational diabetes. This is an MCQ. ये ऐसे आता है कि pulmonary surfactant is less active
in diabetes. ये exact MCQ है और आपके रेफरला में लिखा भी हुआ है. So risk factor, one of the risk factor is gestational diabetes. एक risk factor आया हुआ तो बाकी भी आ सकते हैं. ठीक है. C section. C section में क्या होता है? Decreased release of fetal glucocorticoids. इस वजह से at risk होता है. अब जो वेजाइनल डिलीवरी होती है दैट्स मोर स्ट्रेसफुल फॉर द बेबी एज वेल. ज़्यादा रिलीज होंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मैच्योर होगा कॉन्सिक्वेंटली आपका सर्फेक्टेंट. हाउएवर सी सेक्शन इज लेस स्ट्रेसफुल और उसमें डिक्रीज रिलीज होता है. दैट्स व्हाई दे आर एट अ रिस्क. ठीक है. वी आर नॉट सेइंग डेफिनेटली होगा, दे आर जस्ट एट द रिस्क. सिमिलरली डायबिटीज इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीज फीटल इंसुलिन होती है. ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी हमने कर ली. हमने ये भी देख लिया कि न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होगा? पैची एटेलेक्टेसिस होगा एंड ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगी. Now, what is the treatment? For example, if it's necessary to deliver a premature baby, तो हम क्या करेंगे? हम रुक जाएंगे? No. What we can do is we can administer glucocorticoid to the mother. So betamethasone is always preferred over Dexa, but this is the treatment. And this is injected for lung maturity. उसके अलावा when a baby is born, we can give O2 supply. However, we should watch out for its toxicity, which can cause retinopathy or intraventricular hemorrhage, bronchopulmonary dysplasia. अच्छा, इसका MCQ मुझे इधर एग्जैक्ट इस टॉपिक में नहीं मिला बट कहीं ना कहीं है. And this is the point which comes in MCQ. This also comes in MCQ. Exact किस वीक पे कितना लगाना चाहिए आपको, ये MCQs में नहीं आता, but if you want for your knowledge, it's good. Check for yourself. ARDS से related MCQs आपको इसी point पे, इसी रफीउल्लाह के पेज पे मिलेंगे, but we'll discuss those at the end. And then I'll refer back to the difference between both as well. I hope you're able to understand what surfactant is, what NRDS is, and how we will go along. My next video will be on respiratory anatomy. We will discuss the muscles involved in inspiration, expiration, what is the nerve supply, the dead space, and how it's increased or decreased, and what is a conducting pathway, anatomical dead space. All of these are MCQ. We will discuss this in our next video. And if you found this helpful, please subscribe to my channel. Thank you.